जो है जहाँ हमने इतनी फ़ोटोज़ ली है, ये विराट कोहली का फेवरेट स्पॉट है, जो भी बताया। और ये सचिन तेंदुलकर का फेवरेट स्पॉट है, जिसके लिए वो जब भी यहाँ आते हैं तो यही वाला यूज़ करते थे। इधर वॉशरूम है। सो बेसिकली जब वो पहली बार यहाँ पे आए थे तो यही सीट मिली थी, क्योंकि वो छोटे थे एज में कंपेयर टू अदर टीम मेंबर्स, तो उन्हें वो वाली सीट मिली थी सचिन को। लेकिन उसने फिर वहाँ पे सेंचुरी मारी, तो तब से फिर वो इसी को यूज़ करते थे हमेशा। And Tendulkar sat there and went out to bat on this ground, scored his first century. If you're in the Australian cricket team today, Steve Smith sits there. David Warner did sit here. He's now finished his career. Someone else will get that. This is used for a lot of stories. They put bats and pads in here. Over here is where Marcus Labuschagne sits. Do you like Marcus Labuschagne? होम टीम का यहाँ पर सोफे भी डाले हुए हैं, 22 साले कुशन्स वगैरह दे रखे हैं इन्हें अपनी टीम को। और वो लोग जो थे वो बेंचेस पे बैठते हैं। The rest of the team will then have their spots. Maybe they've sat there on the previous test match, okay? So they tend to try and sit in. That spot happened to be right here. And Tendulkar sat there and went out to bat on this ground, scored his first century. Where do you think he sits the next time he comes back? Sits there, scores another century. An average of 157 he achieved from that seat there because of superstition. That's a famous story in this dressing room. So that's actual stuff. But you've got other players, right? You've got other players that will have their superstitions in here as well. We've got Javed Miandad and Ramiz Raja. Now, these are two Pakistan players because Pakistan used this dressing room last. But when India tour, these will get changed. So which name should we choose? Oscar and Shastri, maybe, yeah? Kumble, we can't use Kumble. I'll tell you. Probably. The reason we couldn't use those other players is these are all the scoreboard. These belong to the scoreboards, the old mechanical scoreboards. And roughly in the mid-1970s, we're starting to get digital scoreboards, so we don't need to hand paint these names on cloth to put up into the scoreboards. So these are from that period. So we could have Gavaskar, and we could have Kapildev. But, yeah, he's a legend, Kapildev. Nobody say bad things about him because I love him. But yeah, this is the room here. Also, were developed and signed off by the English. So the English wanted two distinct rooms for their players. The upstairs with that door was serviceable only by the सो ये ड्रेसिंग रूम है, इंडियन टीम बैठती है। ये जो है जहाँ हमने इतनी फ़ोटोज़ ली है, ये विराट कोहली का फेवरेट स्पॉट है, जो भी बताया। और ये सचिन तेंदुलकर का फेवरेट स्पॉट है, जिसके लिए वो जब भी यहाँ आते हैं तो यही वाला यूज़ करते थे। इधर वॉशरूम है। सो बेसिकली जब वो पहली बार यहाँ पे आए थे तो यही सीट मिली थी, क्योंकि वो छोटे थे एज में कंपेयर टू अदर टीम मेंबर्स, तो उन्हें वो वाली सीट मिली थी सचिन को। लेकिन उसने फिर वहाँ पे सेंचुरी मारी, तो तब से फिर वो इसी को यूज़ करते थे हमेशा, इसी स्पॉट को। ये मेंबर्स का है। इधर बाहर है, मेंबर्स की सीटिंग है इधर। बाहर है इधर मेंबर्स का होगा ना। लाइफ मेंबर्स हैं इसके। ये व्यू है यहाँ से। ये मेंबर्स का है। 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 ये मेंबर्स का है
ये होम टीम मेंबर्स का ड्रेसिंग रूम है इधर, ये सब लिखे हुए हैं। ये है होम टीम का, यहाँ पे सोफे भी डाले हुए हैं बाइसनेस वाले, कुशन्स वगैरह दे रखे हैं इन्हें अपनी टीम को, और वो लोग जो थे वो बेंचेस पे बैठते हैं। तो ये है होम टीम का, जब मैचेस होते हैं तो जो होम टीम होती है वो इधर ये रूम यूज़ करते हैं, और जो ये वॉशरूम है उनका, जो वो पिछले वाला जो था वो जो विजिटर्स होते हैं, विजिटिंग टीम है उनका वो था। तो लास्ट क्योंकि पाकिस्तान आई थी यहाँ पे, हार के गई थी मुँह खा के, तो उनका वो लिखा था। This is a mirror image of the other side with our honour boards on the walls. All the way back to 1882 these records have been kept. And David Warner, Steve Smith and Usman Khawaja are all on 4. But David Warner's not going any further, he's finished. So only Khawaja and Smith have the opportunity of equaling him or going above him. The highest score, and I'm sorry for my Indian guess, it was 329. It was Michael Clark in that series that we've spoken about before. And you've got all sorts of interesting things, like for example, Alan Border, who was a prolific batsman, never scored a century at the Sydney ground. But somehow he was able to take over 5 wickets and land his name on the honour boards for the bowlers. So you've got that. Who just signed for the San Francisco Stingers or something like that? Which one? Unicorns. There you go. Unicorns. He's now on. All right. Is this exciting? Yeah. What's the first thing you see inside this room? They have couches. It's bigger. It's bigger. They have couches to sit. It's cushion there on the. Yeah. So this is the home dressing room, right? Yeah, exactly. But look, if you're in the Australian cricket team today, Steve Smith sits there. David Warner did sit here. He's now finished his career. Someone else will get that. This is used for a lot of stories. They put bats and pads in here. Over here is where Marcus Labuschagne sits. Do you like Marcus Labuschagne? Not Yeah. really? That's right. Over here, Nathan Lyon. Again, a storage facility, sir. I'm sorry. Travis Head. You're an Alex Perry. He's in a good form now. That's right, he is. Cameron Green, the tall, good-looking Western Australian, is right here. The 12th man, Stark, Hazelwood Cummins, the captain, and Khawaja is around the corner. So that's where the players sit today. Philip Hughes would have sat somewhere here, okay? Glenn McGrath used to sit there. I know Ricky Ponting used to sit here. You like it? So, if you ever get the opportunity to play in your country, this is the room you'll come into. Pick your spot. Yeah. But you'll normally get the spot that's been vacated. Yeah. Jokes, okay? So they banished him to the corner. Alright? Now, so when you see Greg Matthews this afternoon, ask him where he sat in the dressing room. Visualize it. Again. Alright. Sat down here by the door. This is where Don Bradman used to sit, right here. So traditional captains like Mark Taylor and Stephen Waugh sat right here. Even Richie Bano sat down here because that is where they felt was their position, being captains in the team. That's where they wanted to sit. And when Don Bradman was 18, 19 years old, he wrote the following in a young person's autograph book. He said the following: if it's difficult, I will do it now. And if it's impossible,
I will do it presently. We're not sure where he got that quote from, but I think he was trying to how good he would become in the game, and he probably inspired himself to be the best player, and that's the quote many sports people look up to before they walk out. Way, sir. And if it's not raining, you're welcome to go down to the Don Bradman Gates, have a look down there. That's for the tea and stuff. ये फिलिप ह्यूज जो इनका एक्सपायर हो गया था बंदा, उसका वो बनाया हुआ है इन्होंने, और जब भी ये बाहर आते हैं यहाँ से तो इसको टच करते हुए बाहर आते हैं। ये इनका वॉकिंग वो है जब ये खेलने जाते हैं ड्रेसिंग रूम से। वापस चलते हैं ग्राउंड पे। चलो भाई, ये व्यू था ग्राउंड का, सभी कवर कर लिया हमने, इनके ड्रेसिंग रूम एंड अदर स्टफ। ग्राउंड बहुत प्यारा है, एक दिन आएंगे यहाँ मैच देखने भी। अभी यहाँ से सब लोग जा चुके हैं उधर, वहाँ पे वो कुछ चीज़ें बता रहे हैं। बाकी ग्राउंड बहुत ही मस्त है, मज़ा ही आ गया भाई देख के। और ये ना स्लोप में है, थोड़ा सा ऐसे स्लोप है, स्लोप ही है, तो आउटफील्ड बहुत तेज़ होगी यहाँ पे। और ये है डॉन ब्रैडमैन स्टैंड, ये डॉन ब्रैडमैन स्टैंड है, और ये सारे हैं यहाँ पे मेंबर्स की सिटिंग है। उधर लोकल पब्लिक जिन टिकट लेके आते हैं जो ग्रीन में है वो सब है। और ड्रेसिंग रूम मैंने दिखाई दिया आपको, इधर ये ड्रेसिंग रूम थे, ये ऑस्ट्रेलिया का ड्रेसिंग रूम है और वो विजिटर्स का है, तो वो सब भी कवर कर ही लिया हम लोगों ने। अब बस हमें अब थोड़ा सा बाहर की तरफ जाना है। अभी ये रग्बी में कन्वर्टेड है, आप ये पोल्स देख रहे हो, ये रग्बी खेलते हैं यहाँ पे, और पिच कवर की हुई है इन्होंने, बारिश का मौसम है इसलिए भी। बाकी चलो, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड था ये स्कोर बोर्ड है जहाँ पे स्कोर बोर्ड रहता है इनका। Please enjoy the rest of the day, and if you're on holidays here, enjoy the rest of your holiday as well. And thanks for coming. I will reopen the museum, and those that need to exit, I'll need to badge you out. So just come and ask me for that to happen, all right? So otherwise, take a few photos here and say goodbye, and everything should be fine. Thank you. थैंक यू। No problem. Thank you, everyone. सो ये था गाइस SCG टूर पूरा ना, मस्त था भाई, मज़ा आ गया देख के मुझे तो। सचिन तेंदुलकर जी कहाँ बैठते थे, विराट कहाँ बैठता है, सारा इन्होंने बताया। पूरा होम टीम का ड्रेसिंग रूम पूरा दिखाया, ग्राउंड पे जाना पर जाके देख पाए हम, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब एज अ क्रिकेट लवर मेरे लिए तो भाई मतलब ऑस्ट्रेलिया की सबसे बेस्ट चीज़ थी जो आज हुई है, जो मेरी ये विज़िट है, तो मज़ा ही आ गया। बाकी चलो चलते हैं यहाँ से। बाकी स्वास्तिक ने थोड़ी सी ग्रासेस ले ली SCG की। लोग को भी करते हैं ख़त्म SCG टूर को, बेसिकली जो हमारा पूरा कवर करने का था। अगर वीडियो सही लगी हो तो लाइक करना, ऐसी वीडियोस और देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, सी यू देन, बाय।